Assalamu alaikum students. Today we have to start exercise 10.2. Basically we have to construct another quadrilateral. Exercise 10.2, page number 158, question number 1. The question number 1 is quadrilateral ABCD in which AB is equals to 3 centimeter, angle B is equals to 50 degree, angle B is equals to 50 degree, BC is equals to 6 centimeter, angle C is equals to 80 degree, and CD is equals to 4.6 centimeter. So students, what we have to do? No students, you have to complete exercise 10.1, question number 1, part A till D. So in exercise 10.2 we have 3 sides and 2 include angles. 3 sides and 2 include angles. 3 sides and 2 include angles means 2 interior angles are given and you have to draw it by the help of these sides and the given angles. So what you have to do in the start, first of all you have to draw a rough sketch. The rough sketch is, the angles are given on the two lines which is on B and C. So what you have to do, you have to take that line as a baseline on which the angles are given. So you have to take it as B and C. It means B and C is given which is equals to 6 centimeter. It is a quadrilateral. So you have to take it as A, B, C, D. A, B, C and D, in which angle B is equals to 50 degree. Why we are taking B, C is a baseline? Because on B and C is the baseline because the angles are given on this. सली को बुलाइएगा. So students, what you have to do, the baseline is B and C because the two angles are given and that two angles are angle B and angle C. So angle B is equals to 50 degree and angle C is equals to 80 degree. After that, what you have to do, when you have to
Hello. Students, can you hear me properly? Okay, now students, first of all you have to take BC as a baseline. After that, what you have to do? Now from B and C, you have to make angle of 50 and 80 degree, because the angles are given which is equals to 50 degree, and name them as X. Name them as X. After that, from point C, you have to measure angle of 80 degree. 50 and 80 degree. Name them as Y. Then students, what you have to do? You have to mark an arc from point B. From point B you have to mark AB, and from point C the measurements are AB is which is equals to 3 centimeter, BC is equals to 6 centimeter, CD is equals to 4.6 centimeter. Angles, angle B is equals to 50 degree, angle C is equals to 80 degree. So we have drawn the angles, we have drawn the baseline. Now move towards AB and CD. From point C you have to mark D, and from point B you have to mark A. So open the compass of 3 centimeter, because AB is equals to 3 centimeter. So you have to take the radius of 3 centimeter and mark the arc which intersect B and X. Basically B and X is a ray, so you have to intersect that by the help of compass. So it will becomes the intersecting point is known as A. Then students, what you have to do? From point C you have to mark another arc which is equals to 4.6 centimeter, and 4.6 centimeter means you have to open the compass of 4.6 centimeter. After 4, count 6. Then mark another arc which intersect the ray of CY. Now the intersecting point is named as B. After that, what you have to do? You have to join the intersecting point. Intersecting points are D and A. So you have to join the intersecting points. Angle B was 50 degree. Angle C was 80 degree. The measure of angle AB is equals to 3 centimeter, and CD is equals to 4.6 centimeter. Okay, after that write down the steps of construction.
Okay, the first step is basically, students, the rough sketch was basically it is on three sides and to include angles. So the rough sketch will be A, B, C, D. We are taking B, C as a baseline. So 50 degree and 80 degree is on B and C. Then what we have to do? We have to mark the measurements: 3 centimeter, 6 centimeter and 4.6 centimeter. After that, you have to take baseline as BC. So first of all, write down point number 1. According to point number 1, Arman, we have discussed that we can construct quadrilateral according to the 5 conditions. According to 5 conditions, we have construct the quadrilateral. First condition is four sides and one angle. Second condition is 4 sides, one angle. Second condition is 4 sides, one diagonal. Third condition is 3 sides, two diagonals. Fourth one is 3 sides, two included angles. And the fifth one is two adjacent sides and 3 angles. Clear? So we have discussed 4 side, one angle. We have discussed 4 side and one diagonal. Now we are forming the quadrilateral by 3 sides and two included angles. So you have to mention 3 sides and two included angles. Then students, what you have to do? In the very first step, draw a line segment. Draw a line segment BC which is equals to 6 centimeter. The first point is draw line segment BC which is equals to 6 centimeter. On the very first step, we have draw the line which is equals to 6 centimeter. Then point number 2 is draw a ray BX and CY such that angle CBX is equals to 50 degree and angle BCY is equals to 80 degree. Now after drawing the line segment of 6 centimeter, what you have to do? You have to mark the angle of 50 degree from B, because angle B is given, and from point C you have to mark 80 degree. आपने 50 डिग्री कहाँ से मार्क करना है? पॉइंट बी से, और 80 डिग्री मार्क करना है पॉइंट सी से. Then you have to form the ray. Name the ray as X and another one will be Y. Then the third point is with B as a center and radius and radius 3 centimeter, draw an arc intersecting the ray BX at point A. Then you have to open the compass of 3 centimeter. From point B you have to mark an arc. The arc will intersect B and X. आप B point से एक arc mark करेंगे of 3 centimeter. Then name them point as A. Now the fourth point is
with C as a center and radius 4.6 centimeter. Draw an arc intersecting the ray CY at point D. Okay, we are doing the same step on point C. On point C, you have to mark another arc of which is equals to 4.6 centimeter. Then name them as D. Now the fifth point is join and D. So ABCD is the required quadrilateral. So students, what you have to do now, by the help of these points, I am constructing the quadrilateral again. If you are facing the difficulty, so I am repeating the construction of quadrilateral again. Basically, the first point is draw a line segment BC 6 centimeter. So just draw the line segment B and C, which is equals to 6 centimeter. B, C, 6 centimeter. After that, draw a ray BX and CY such that angle CBX is equals to 50 degree and angle BCY is equals to 80 degree. Now in the second step, you have to mark an angle and draw the ray. So on the angle on the point B, you have to mark 50 degree. After marking it, you have to draw the line of. Now name them as X. Clear? Then students, what you have to do? When you completing the angle BX, moving towards the other angle which is on angle C, which is equals to 80 degree. Now on angle C, you have to mark 80 degree. Now draw the line. आपने इन दोनों लाइंस को क्रॉस नहीं करना है, just make one smaller and one greater. Now name them as Y. The first one is BX and the second one is CY. After that, the next step is with B as a center and radius 3 centimeter. Draw an arc intersecting the ray BX at point A. So the third step is you have to mark 3 centimeter at point B. Why we are marking 3 centimeter? Because AB is given, which is equals to 3 centimeter. So 3 centimeter from A, from point B. Now this arc is
Now this is basically the intersecting point and you have to name them as A. So AB is equals to 3 centimeter. Okay, the next point is with C as a center and radius 4.6 centimeter, draw an arc intersecting the ray CY at point D. Now you have to follow the same step on point C. So on point C you have to mark a radius of 4.6 centimeter because CD is equals to 4.6 centimeter. Now 4.6, you have to mark an arc which is equals to 4. No beta, it is part A. I am just repeating part A. Due to some issues, I am repeating part A. Okay, after that from point C, you have to mark an arc of 4.6 centimeter. Now name them as D. Now D, C or CD is equals to 4.6 centimeter. Clear? Now what will be the next step? The next step is join A and D. So ABCD is the required quadrilateral. After marking point A and D, you have to join the intersecting points, which is point A and point D. So this ABCD is a required quadrilateral. So students, just take a screenshot of this question. After that we will start question number 1 part B. It is part A. After that we will start part B. Students, have you taken the screenshot? Students, just reply me in the chat box. Okay, after that moving towards question number 1 part B. Question number 1 part B is that quadrilateral PQRS in which PQ is equals to 4 centimeter, QR is equals to 4.5 centimeter, SP is equals to 4 centimeter, PR is equals to 6 centimeter, and the last one is QS, which is equals to 6.5 centimeter. It means you have to draw a quadrilateral which has PQRS. So the quadrilateral will become, the rough sketch is, so name them as PQRS. So the length of PQ is 4 centimeter,
QR is 4.5 centimeter. SP is 4 centimeter. Now PR is given. PR means it is basically the diagonal. PR is given, which is equals to 6 centimeter. Then QS is given, which is, yes, you have to complete this question same as exercise 10.1. First of all, you have to copy question number 1. After that, write down the steps of construction, and on the next page you have to construct the figure. Now the last one is QS, which is equals to 6.5 centimeter. So QS will be 6.5 centimeter. So basically, students, we have three sides. The sides are PQ, QR and SP. There are three sides which are given. So three sides and two diagonals. Basically, the construction is on three sides and two diagonals. So we can construct the quadrilateral if we have three sides and two diagonals. So you have to mention three sides and two diagonals on the figure. Now how can we construct it? First of all, you have to make baseline. The baseline is, we have taken the baseline which is equals to QR, and QR is equals to 4.5 centimeter. So 4.5 centimeter, which is the baseline. The baseline is Q and R, which is 4.5 centimeter. Now the angles are not given. So what we have to do? We have to mark an arc from Q. You have to mark an arc with radius 4 centimeter. Now from point Q, you have to make two sides, QR and PQ. R is already done. Now move towards PQ. I am writing the sides again. PQ is equals to 4 centimeter. QR is equals to 4.5 centimeter. SP is 4 centimeter. PR is equals to 6 centimeter. And QS is equals to 6.5 centimeter. We have done QR. Now move towards, from point Q, you have to mark P of 4 centimeter. Now open the compass of 4 centimeter. Open the compass of 4 centimeter and mark an arc. After that, from point R, you have to mark another arc. We have done PQ, which is equals to 4 centimeter. Now P and R is also given, which is equals to 6 centimeter. What you have to do? You have to mark another arc of 6 centimeter. So from point R, you have to intersect the arc. Basically, students, we are marking point P. So name them as P. PQ is given, which is 4 centimeter, and related to P there is another measurement which is 6 centimeter. So from point R you have to mark
6 centimeter. Now join the points PQ and PR. After that, it is a triangle, but we have to make quadrilateral. Now we have to use another measurement. We have done PQ and QR and PR. Now move towards SP and QS. Now the common point is S. It means we have to draw S. हमने अब S point बनाना है by the help of Q and P. So take Q and P as a center point and you have to mark S. So from point P you have to take 4 centimeters. So just open the compass of 4 centimeter. From point P you have to mark an arc of 4 centimeter. Then it is all done. After that QS 6.5 centimeter. Now Q as a center and you have to make 6.5 centimeter. 6.5 centimeter. So open the compass of 6.5 centimeter. Intersect the previous arc, which is equals to 6.5. Now name them as S. Just extend the previous arc. If your arc is smaller, then you have to extend the previous arc. So it must be look like this. After that, name them as C. Now you have to join PS because we have done the measurement of PS. Now this measurement is equals to 4 centimeter. PQ is equals to 4 centimeter. PR is equals to 6 centimeter. After that QS is equals to 6.5 centimeter. You have to draw the quadrilateral. So after that, after getting point S, what you have to do? You have to join point S and point R. But there is no fixed measurement of point S and R. So basically it is a quadrilateral which is formed by the help of 3 sides and 2 diagonals. Students, you must mention this 3 sides and 2 diagonals. Now write down the steps of construction. Now the steps of construction are: the first step is draw a line segment QR which is equals to 4.5 centimeter. On the first step, what we have done, we have drawn the line segment of 4.5 centimeter. Then the second point is with Q and R as center, with radius 4 centimeter at Q and 6 centimeter at R, draw 2 arcs intersecting each other at point P.
After that, what we have done, from point Q you have to mark an arc of 4 centimeter, and from point R you have to mark you have to intersect the previous arc, which is of 6 centimeter. Now the third point is with Q and P as center, with radius with radius 6.5 centimeter at Q and 4 centimeter at P. Draw two arcs intersecting each other at point S. Now from point Q and point P you have to mark two arcs, which is point S. From point Q you have to mark 6.5, and from point P you have to mark of 4 centimeter. So the last point is join QP, PS and RS. PQRS is the required quadrilateral. Now after marking the arcs you have to join the lines, so it will equals to, now it will becomes a quadrilateral, which is PQRS. So students, just take a screenshot. Now it's your break time. We will continue this in the next class. हमने कुछ नहीं करा, हम बैठे हैं। Hello.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum student. Welcome to the class. Can you hear my voice? Can you see the slides? Okay beta, let's start our class. One thing, beta wait for a while.
Now, I have to discuss the previous topic that was remain. So, starting from the previous topic, this one, information technology. इट इज़ गिवन इन योर पेज नंबर का लास्ट टाइम ये कवर करवाना रह गया था, इस वजह से पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके स्टडी पैक में गिवन है पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 से आज स्टार्ट करवा रही हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट? First of all, the word technology. From the past time, people are inventing something. जैसे हमारे पास we invented radio, television, telephone. So these were the technology that we invented to contact with the other persons for the communication purpose or to make our work easily. So by that time there is another advancement in the technology. So this more advancement is called information technology, and by the definition it is a process and distribution of data using computer hardware and software, telecommunications and digital electronics. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? वी ट्रांसफ़र द डाटा। ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट द डाटा बाय यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू, यानी इसके इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के थ्रू। देन टेलीकम्युनिकेशंस लाइक योर मोबाइल फोन्स, योर टैब, this all are the part of the telecommunication and digital electronics. So digital electronics also include कैमराज, डिजिटल कैमराज होते हैं हमारे पास, ठीक। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स भी हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड हो जाता है। यह हमारे पास जैसे हम जिस कैमरे के थ्रू हम रीड कर रहे हैं, हम अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक। जो हम आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा OBS, जो भी हम सिस्टम के थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं? This is called information technology. So due to information technology there has been a lot of development. बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। We have developed so much due to the information technology. Now the advantages of the information technology. So बाय दिस टेक्नोलॉजी द डिस्टेंट, यानी जो दूर के एरियाज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द डिस्टेंस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कम क्लोजर। इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, यानी जो भी इम्पॉर्टेंट वाक़यात वगैरह होते हैं इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड बी नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद इन द सेकेंड ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कंप्यूटर के थ्रू हमारे पास हम कितनी विद इन सेकेंड्स वी कैन get the information through computers. Not only educational programs can be presented, but its use has become necessary in all fields of life. We can use computers in every fields of life, whether it is a medicine field or your education field or your agricultural field हो सकता है, या educational field में ही कर सकते हैं आप। We use the computers and we work with it. So by sitting at home, we can be in contact with all people all around the world by using our computer, by using our mobile, by using our the tab. We can easily contact with other persons. So it is the information technology. So students can collect full information about any educational institution. they जो abroad पढ़ने जा रहे होते हैं, बाहर कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम योर होम। Then we can also search information about any subject, any topic on the internet within second. So it is very convenient, or it is very easy for us to search about any topic with the help of the information technology। और उसके जो हमारे पास किसके थ्रू हम कर रहे हैं, थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं, थ्रू हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देन इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इंटरनेट इज़ दैट सिस्टम थ्रू विच वन कंप्यूटर कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम एन अदर कंप्यूटर, and computer can be used for many purposes, for example modern research, entertainment and business purposes. So beta, computer can be used for many purposes, यानी computer is the part of the information technology
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है उसमें कंप्यूटर हैज़ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन. With the help of a computer, the world is become very closer. We can contact with any person with any part of the world within few seconds. So this were the advantages of information technology. Now steps are being taken in Pakistan for the development of information technology. So what our Pakistan is doing for promoting the information technology, so these steps are different institutions have been provided with computers, like you can see in the government institution में भी बात करें तो the work is done with the help of a computer. The data is feed in the computers and the operators हैं. जैसे अगर हम कंप्यूटर एग्जाम्पल बात करें इंस्टीट्यूशन की, जैसे नादरा है वेयर वी फ्रॉम वेयर वी गेट आवर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. जो हमारा एनआईसी कार्ड होता है वो हमें नादरा से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिस है, तो वहाँ पर आप देखें कंप्यूटर का कितना यूज़ होता है. तो जाहिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वी यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आवर मैनी इंस्टीट्यूशन. सो गवर्नमेंट मैनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन हैव बीन इस्टेब्लिश्ड. कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे हमारे पास मौजूद हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. देन अ सेपरेट यूनिवर्सिटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज has also been established. The government of Pakistan plans to make information technology common and inexpensive. Our government is making some strategies that information technology will be common, इन सबके पास अवेलेबल हो और इट इज़ अनएक्सपेंसिव. तो बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आजकल वैसे भी इन एक्सपेंसिव ही है. वी कैन ईजिली बाय अ कंप्यूटर विद अ लेस प्राइस. वी कैन ऑल्सो बाय मोबाइल फ़ोन. दे आर नाउ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम. पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास हमें लो अमाउंट में ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है. For the development of information technology, recently a virtual university has been established with the main objective of providing inexpensive and quality education to the students. So, हमारे पास virtual university भी establish करी है by the government to providing the education to the students. So these are the steps that government is doing for making the information technology available for the other persons, and it should be inexpensive or it should be in common for the pupil. So by moving forward इट्स होमवर्क, ये टॉपिक ज़रा मैं ख़त्म करूँगी तो फिर लेसन 7 स्टार्ट करूँगी. लास्ट टॉपिक देखें, पिछला वाला फर्स्ट वन मत देखिएगा, वो हमारा कल वाला वर्क है. नंबर 2 देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 31 एंड 32. तो पेज नंबर 31 32 का होमवर्क है आपका रिलेटेड टू द टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब इसको मैं ज़रा क्लीन करती हूँ, आपको कैमरा शो करती हूँ कि हमें अपने स्टडी पैक में क्या करना है. यहाँ देखें दिस वन, पेज नंबर 30 31 और यहाँ तक एंड होगा 32 तक. यहाँ आए, ब्लैंक्स देखें आप लोग, पहले अपने साथ स्टडी पैक रखें, पेंसिल और पेन लिखें. बेटा नंबर 1 ब्लैंक डिस्कस कर रही हूँ, स्टडी पैक आपके पास होना चाहिए. लुक इनटू योर स्टडी पैक. ये टॉपिक खत्म करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे. नंबर 1 ब्लैंक ऑन पेज नंबर 30. द प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट इन डैश is never ending. So the process of advancement in technology, the process of advancement in technology is never ending. Number 2, technology is dash day by day. Technology is advancing. Technology is advancing day by day. Number 3, due to information technology there has been a lot of dash. Due to the information technology there has been a lot of development. Now number 4, due to dash many distant countries have come closer. Due to information technology, due to information technology many distant countries have come closer. Now we have to discuss the question answers on page number
30. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेटा आप इसमें इसकी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं दिस वन में, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है भी। इट इज़ द प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। देन बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर व्हाट राइट द एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हमने डिस्कस करें। ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द डिस्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कम क्लोजर। Important incidents in one part of the world could be known all around within seconds. And through computers, not only educational program can be presented, but it has become necessary in all fields of life. By sitting at home, we can be in contact with people all around the world. Students can collect full information about any educational institution. We can search information about any subject in on the internet within second. इंटरनेट, ये जो मैंने अभी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करे हैं, तो बेटा इन पॉइंट्स को आप एज अ एडवांटेजेस राइट कर सकते हैं, ठीक, इन योर आंसर। ठीक, अब है इसके बाद व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन पाकिस्तान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो अभी मैंने आपसे लास्ट में डिस्कस किया है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इसमें हाँ हेडिंग्स लिख सकते हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन पाकिस्तान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें पॉइंट एंड कर सकते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैव बीन प्रोवाइडेड विद कंप्यूटर्स, मैनी कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, a separate university for information technology has also been established. The government of Pakistan plans to make information technology common and inexpensive. For the development of information technology, recently a virtual university has been established with the main objective of providing inexpensive and quality education to the students. तो दिस पॉइंट जो हमने अभी आपको मैंने शोन करें, दिस वन मिनट, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन फिर आप लिख सकते हैं इट्स एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन steps are being taken in Pakistan for the development of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेप्स भी आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका होमवर्क चला गया पेज नंबर 32 तक। नाउ मूव फॉरवर्ड। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय अनदर टॉपिक, दैट इज बेटा आपको स्क्रीन शो हो रही है? पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन 6 का आंसर। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, बेटा ये तो प्रीवियस टॉपिक है हमारा। दिस वन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। We cannot survive without international trade. It leads to the economic prosperity. Through the international trade, we earn foreign exchange, और foreign trade helps in transfer of technology. सही, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। आई एम स्टार्टिंग नाउ लेसन नंबर 7, दिस वन। ठीक, हमारे पास tourism, it is your lesson 7 on page number 32. The topic is tourism and its importance. The topic is tourism and its importance on page number 32. सही, नाउ बेटा मूव फॉरवर्ड। अभी गौर से सुनिएगा वाला टॉपिक।
आज हमने लेसन 7 स्टार्ट कर दिया, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है. तो व्हाट इज टूरिज्म? टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Tourism means traveling from one place to another. It's called tourism. Yani we travel from one place to another for the purpose of enjoyment, for the purpose of discovering. हम टूरिज्म में हम पिकनिक के तौर पर, जैसे हमें कोई प्लेसेस होती हैं, जैसे मैं मालदीव्स है, मॉरिशियस है, तो मैं अगर वहाँ जाना चाहती हूँ घूमने के लिए, तो वो मैं क्या कहलाऊँगी? आई विल बी अ टूरिस्ट. और वो प्लेस हमारे लिए क्या कहलाएगी? टूरिज्म मिनी पिकनिक प्लेस कहलाएगी. और जो ये प्रोसेस मैं करूँगी, आई विल मूव माई कंट्री टू द अनदर कंट्री, तो ये ट्रैवलिंग, ये प्रोसेस कहलाएगा मेरा टूरिज्म. तो टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Now, what its importance? In the Holy Quran, at many places, Muslims are persuaded to travel and visit different places to observe beautiful natural sights and for witnessing the remnants of the past. Remnants यानी leftover items को कहते हैं. Of the past, for taking appropriate lesson and guidance from the rise and fall of civilizations. यानी अल्लाह ताला ने होली कुरान में भी लोगों मुसलमानों को ये हिदायत दी है कि ट्रैवल करें, विज़िट करें, अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेचुरल साइट्स जो हैं, जो सीनरीज हैं, ब्यूटीफुल मकामात हैं, उन्हें देखें. और इन्हीं अल्लाह ताला इन्हीं उन निशानियों के गवाह बने और उनसे सबक लें और गाइडेंस लें. किससे? जो लोगों का जवाल हुआ है या लोगों का उरूज था, जैसे मोहनजोदाड़ो की पीपल्स हैं, दे ख़त्म हो गए, उनका एंड हो गया. जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी, इसमें मोहनजोदाड़ो सिटी में, पाकिस्तान में. तो बेटा ये कैसे होगा? व्हेन वी डू द ट्रैवलिंग. सो tourism important is that it is also in the Holy Quran that we have to travel different places and we have to observe the natural sights, and we also have to observe the remaining items of the past and observe them, that how the different nations got the fall और how did they rise. यानी अल्लाह ताला की निशानियों को जानने के लिए भी हमें ट्रैवल करना है. फिर tourism promotes knowledge and promote entertainment and recreation. How it promotes? When we go any other places, so we'll get knowledge, and it also provide entertainment. ज़ाहिर है we will entertain ourselves by moving to a beautiful places. And recreation, like can when we go any other places, maybe a idea, new idea come in your mind, and by looking new things in other countries, where we can apply this new ideas in our country. हम वापस आके अपनी कंट्री में भी कुछ रिक्रिएशन कर सकते हैं. ठीक, फिर इट इज़ an important, ये ए एन है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड मेक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम कैसा आएगा? फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द, यानी जो गवर्नमेंट के पास इनकम आता है वो कैसे अर्न होगा? जैसे अभी इमरान खान है, आपको पता है, आवर प्राइम मिनिस्टर प्रमोटिंग द टूरिज्म, he inviting the other people from the country to visit our beautiful places like in northern areas. जैसे हमारे पास ब्यूटीफुल प्लेसेस में मरी प्लेसेस हैं, हमारे पास नारान कागान प्लेसेस हैं. तो बेटा वहाँ पर टूरिस्ट कम फ्रॉम द अदर कंट्री, when they stay there they spend their money to the hotels. From these hotels they spend some amount of money. So गवर्नमेंट पुट टैक्स ऑन द डिफरेंट होटल्स जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. तो बेटा वहाँ से गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? गवर्नमेंट विल अर्न इनकम, जो नेशनल इनकम कराता है, फॉरेन एक्सचेंज कराएगा, प्रॉफिट होगा. तो टूरिज्म ऑल्सो ब्रिंग सम नेशनल इनकम टू द कंट्री एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल, like people who are doing work near the tourist areas, so they will get jobs and they will earn income for doing their work. Now, places for the interest for the tourism in Pakistan. Now, Pakistan has many places which attract the tourists from all parts of the world. We have many places in our country. In our country, like Mohenjo-daro and Harappa, the sites of Mughal architecture, the statue of Gautama Buddha in Taxila, Punjab में Taxila site, are a source of great interest for the tourist.
मोहनजोदड़ो हमारे पास सिंध में, हड़प्पा हमारे पास पंजाब में. तो दिस आर द ब्यूटीफुल प्लेसेस द टूरिस्ट कैन विजिट. High mountain peaks, green fertile valleys, rivers, coastal areas also attract tourists from all parts of the world. So tourists, many other people as a tourist come in Pakistan, and then they can visit these areas and they can entertain themselves. Okay, now बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इसका होमवर्क भी है, लेकिन पहले मैं इसका होमवर्क डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि आगे अगला टॉपिक जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा. यहाँ पर आए, अपने स्टडी पैक पर आए, पेज नंबर 32 पर आए, अपना स्टडी पैक अपने पास रखें बिल्कुल. टूरिज्म, इसका टॉपिक है टूरिज्म एंड इट्स इम्पोर्टेंस. तो इसके पहले ब्लैंक्स डिस्कस कर रही हूँ. नंबर 1 ब्लैंक है, गौर से सुने. डैश मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किस चीज़ के मीनिंग है? टूरिज्म. टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिर नंबर 2, tourism makes substantial contribution to the dash, to the national income. Tourism makes substantial contribution to the national income. यस बेटा, आप लोग आंसर बता सकते हैं. आप ब्लैंक्स जो है ना लिखते, आप जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप ब्लैंक्स में लिखते रहें. नंबर 3, टूरिज्म प्रमोट्स डैश एंड प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट. तो टूरिज्म प्रमोट्स नॉलेज एंड प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट. फिर नंबर 4, टूरिज्म हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज डैश. टूरिज्म हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी. इकोनॉमी यानी वेल्थ को कहते हैं. अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया नेशनल इनकम. सो द प्रॉफिट दैट गवर्नमेंट अर्न, इट विल बी counted as wealth, and when we earn more profit, so will say that the economy of the country is going good. यानी हमारी मईशत अच्छी जा रही है अगर हम पैसे अर्न करेंगे थ्रू द टूरिज्म. तो यहाँ पे टूरिज्म हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी. फिर बेटा नंबर 5 देखो, ये जो है ये एक डाटा गिवन दिया गया है. ठीक, ड्यूरिंग द 2000 the total number of international tourists has been 70 millions. 70. ये जो है हमारे पास इन 2000 we have the tourists and their quantity was 70 million. तो during the 2000 the total number of international tourists has been 70 million. फिर अब क्वेश्चन आंसर्स देखें, बहुत आसान है. टूरिज्म को डिफाइन करना है, ये तो आपके ब्लैंक में भी लिखा हुआ है. टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक, तो ये आप डेफिनेशन ऐड कर दिएगा. देन आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस. क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपने पास. डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म. तो बेटा यू कैन राइट importance of tourism. This one. In the Holy Quran, at many places Muslims are persuaded to the travel and visit different places to observe beautiful natural sights and for witnessing the remnants of the past, for taking appropriate lesson and guidance from the rise and fall of civilizations. Tourism promotes knowledge and provide entertainment and recreation. It is an important industry and makes substantial contribution to the national income. It is an important means of income for the people. So you can write your importance of tourism. फिर आपके स्टडी पैक में देखें क्वेश्चन नंबर होगा राइट द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर द टूरिस्ट इन पाकिस्तान. सो आप हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं. पाकिस्तान हैज़ मैनी प्लेसेस which attract tourists from all parts of the world. In our country, Mohenjo-daro, Harappa, the sites of Mughal architecture, the statue of Gautama Buddha and Taxila are the source of great interest for the tourist. High mountains, peaks, green fertile valleys, rivers, coastal areas also attract tourists from all parts of the world. अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं. ये आपका राइट द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 3. सही है. अच्छा, अब हमारे पास आए
दिस टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स रिमेनिंग है। अल बैरूनी एंड अल बैरूनी का स्टार्ट करती हूँ, सिर्फ अल बैरूनी डिस्कस करके। Now, after the importance of tourism, in our chapter, we have the topic of well known travelers and explorers. Travelers and explorers are the persons who search out or find out new places or things all around the world, and they also invent some new things. So, in our book, the first topic is about Al Biruni. You can see his picture, Al Biruni. He was a famous Muslim traveler. Al Biruni was a famous Muslim traveler. Now, about its introduction. Now, अल बैरूनी, बेटा मेरे पास 10 मिनट्स हैं, मैं इसको सिर्फ अल बैरूनी डिस्कस कर रही हूँ आज आपसे। अल बैरूनी नेम वाज अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अल बैरूनी फुल नेम वाज अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ अल बैरूनी। अल बैरूनी वाज वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इस्लाम। अल बैरूनी को मुसलमानों का, जिन्हें हमारा मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कंसिडर किया जाता है। A universal genius that lived in the Central Asia a thousand of years ago, Al-Biruni was born 4th September in Khwarizm. Khwarizm Central Asia में एक सिटी थी, at that time Khwarizm कहते थे, but today it is fractionated and belongs to Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan. Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan are now the part, ये जीनी जो ख्वारिज़म Mypus at that time it was a region in the Central Asia. Now presently it is known as Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan. And Al-Biruni was born on 4th September in Khwarizm. So when he leaving his homeland, Al-Biruni wandered in Persia. He went to the Iran and Uzbekistan. Then after महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनवी जो थे उस ज़माने में, उन्होंने कन्वर्ट किया था एमायरर्स ऑफ बुखारा, तो एल्बरूनी वहाँ पर आ गए थे। एल्बरूनी मूव्ड इन गजनी, दिस टाउन विच इज़ इन मॉडर्न अफगानिस्तान। फिर ये वहाँ पर भी चले गए थे अफगानिस्तान, ठीक। वॉज एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ गजनवी डायनेस्टी। जो महमूद गजनी थे, इन्होंने इंडिया में उस वक्त जो है सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे अफगानिस्तान उसका पार्ट था इन द सब कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे वो एरियाज को कन्वर्ट कर लिया था। तो पहले तो महमूद गजनवी ने अल बैरूनी वहीं पे चले गए थे, जब उनके कैप्चर में आया तो अल बैरूनी भी वहीं उन्हीं एरियाज में आ गए। तो अल बैरूनी को पहले उन्होंने कंसिडर नहीं किया था, बट आफ्टर नोइंग इस कैपेबिलिटीज महमूद गजनवी गेव हिम रिस्पेक्ट। तो महमूद गजनवी जब वहाँ पर थे तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन 1017 अल बैरूनी ट्रेवल टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्टडिंग द इंडियन साइंस एंड कन्वेइंग इट टू द इस्लामिक वर्ल्ड। तो इन द सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब एरियाज आते हैं, ठीक। तो एट दैट टाइम अल बैरूनी ट्रेवल टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ही स्टडी द इंडियन साइंस एंड कन्वेइंग इट टू द इस्लामिक वर्ल्ड। यानी इंडिया में रहते हुए ही स्टडीड अ लॉट, ही गैदर्ड मैनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद अल बैरूनी ने ही आल्सो स्टडीड astronomy, he was an astronomer, he studied mathematics, he was a mathematician, he studied philosophy, he was a philosopher, he also studied physics and natural science too. He was a physicist, यानी वो फिजिक्स भी उन्होंने लर्न करा, फिजिक्स टॉपिक, फिजिक्स सब्जेक्ट पर भी इनको कमांड हासिल थी। देन अल बैरूनी wrote his famous book Asarul Bakia, which gives detailed information about civilization, society, and politics of the earlier nations. Like Al Biruni wrote down many books showing the information about astronomy, maths, philosophy, and physics. यानी ये सिर्फ एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ही स्टडीड मैनी सब्जेक्ट्स, ही हैड कमांड ओवर मैनी सब्जेक्ट। As a Muslim, he was a great scientist. Now, what he had done, the famous work of Al Biruni.
Al-Biruni traveled for about 30 years through the length and breadth of the subcontinent. यानी जो subcontinent था at that time, he lived there for about 30 years. He learned about Hindu religion and philosophy from the Pandits and in return taught them Arabic and Greek. He mastered a difficult language like Sanskrit and translated Bhagavad Gita into Arabic. He was a prolific writer. He wrote in philosophy, mathematics, geography, history, physics, and astronomy. He summed up his observation experiences in India in his well-known book Tehqiqul Hind. In this book, he presented a true picture of Hindu religion, philosophy, society, and culture. Hindus were so much expressed by his learning and called him Vidya Sagar or the Sea of Knowledge. First Muslim, he was the first Muslim who introduced Indian chess in the Muslim countries. He was also the mathematician who made calculations about the circumference of the earth. He also discovered the method of finding out the direction of Qibla. He also proved that lights travel faster than sound. His excellence in astronomy earned for him the popular title of wizard. He died in 1040 AC. So this the great work of Al-Biruni, famous work of Al-Biruni, जो अबू रेहान अल-बरूनी ने किया था, यानी उन्होंने 30 इयर्स ही मूव टू द सब कॉन्टिनेंट, फिर देन उन्होंने हिंदू रिलीजन को स्टडी किया, फिलोसफी को स्टडी किया, और पंडित जो थे एट दैट टाइम उनसे जो है हिंदी को लर्न कर कर उनको अरबी को ग्रीक लर्न करवाई. ग्रीक लैंग्वेज कहाँ से बिलोंग करती है? यूरोप से. और उन्होंने मास्टर्स यानी भगवद गीता को भी ट्रांसलेट किया अरबिक में. एंड ही ऑल्सो written down the books on philosophy, mathematics, geography, history, physics और astronomy में. फिर उन्होंने अपनी एक और बुक लिखी that is known as तहकीकुल हिंद, और तहकीकुल हिंद में उन्होंने अपना एक जो है ट्रू पिक्चर ऑफ हिंदू रिलीजन, फिलोसफी और सोसाइटी को जो है रिप्रेजेंट किया. फिर हमारे पास हिंदूज उनसे बहुत इम्प्रेस थे, दे उनको विद्यासागर या सी ऑफ नॉलेज कहते थे. फिर वो फर्स्ट जो इंडियन चेस उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करवाया. फिर उन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ उसकी कैलकुलेशन को फाइंड आउट किया. उन्होंने मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ किबला को भी फाइंड किया. फिर उन्होंने ही प्रूव लाइट जो है वो साउंड से मोर फास्ट ट्रैवल करती है, इसको भी प्रूव किया. फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में यानी उनको जो ये जो इल्म होता है स्टार्स का, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल थी. वो लोगों को हेल्प भी करते थे. ठीक, तो उनका टाइटल ही ऑल्सो गेन द टाइटल ऑफ विज़र्ड. उनकी डेथ हुई 1040. तो ये इंट्रोडक्शन है हमारे पास और ये फेमस वर्क ऑफ अल-बिरूनी. अब आप आएँ इसका होमवर्क पर. बेटा ये टॉपिक तो था मेरे पास अल-बिरूनी के साथ. अगर आप देखें आपके पास गिवन है इब्ने बतूता. इब्ने बतूता मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ, तो मैं अल-बिरूनी का काम ज़रूर आपसे डिस्कस कर लेती हूँ. अपने होमवर्क पे आ जाए. डिस्क्राइब द फेमस वर्क ऑफ अल-बिरूनी. जो आपने भी ये जितनी आप पे स्पेस दी हुई है आपको पहले ये दोनों क्वेश्चन देखें, फिर मैं आपको उसका आंसर डिस्कस करती हूँ. पेज नंबर 34, पहले मेरी बात गौर से सुन लें, 3 मिनट है मेरे पास. पेज नंबर 34 तक, यानी आपका जो होमवर्क मैंने आज स्टार्ट करा था ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करा था, पेज नंबर 30 से लेकर 34 तक दिया है. तो 34 तक आप काम करेंगे. यहाँ 2 क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चन सुने. डिस्क्राइब द फेमस वर्क ऑफ अल-बिरूनी. फेमस वर्क ऑफ अल-बिरूनी वी डिस्कस इट. अभी मैं आपको उसको शो भी करती हूँ. एंड What do we learn from Al-Biruni works in Tehqiqul Hind? तो ये भी हमने से क्या लर्न किया, तो ये भी मैं आपको शो कर रही हूँ. 1 मिनट. This one. Now. This. तहकीकुल हिंद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं. What do we learn from Al-Biruni's तहकीकुल हिंद? तो यहाँ देखें, he summed स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर रही हूँ. क्वेश्चन व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम अल-बिरूनी वर्क्स इन तहकीकुल हिंद. दिस वन. ही सम अप
his observation and experience in India in his well-known book Tehqiqul Hind. In this work or in this book, he presented a true picture of Hindu religion, philosophy, society and कल्चर. तो आप इससे आंसर बना के अपना लिख सकते हैं. ठीक. अब जितने भी फेमस वर्क है हमारे पास सारा रिटर्न है कि ही लर्न अबाउट हिंदू रिलीजन फिलोसफी फ्रॉम द पंडित एंड इन रिटर्न ही टॉट देम अरबिक एंड ग्रीक. ही मास्टर्ड अ डिफिकल्ट लैंग्वेज संस्कृत, ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू अरबिक. और आप जो इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है ये इन सब में ये पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहिए. जैसे ही रॉट ऑन फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड फिजिक्स. फिर he was first Muslim who introduced the Indian chess in the Muslim world. He was also the first mathematician who made calculations about the circumference of the earth. ये भी आप फेमस वर्क में लिख सकते हैं. He also discovered the method of finding out the direction of Qibla. He also proved that light travels faster than sound. And his excellence in astronomy earned for him the popular title of wizard. So these all points you can select by writing your answer. जो आपको आपके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉइंट्स लगे वो आप यहाँ पर फेमस वर्क ऑफ अल बेरूनी में ऐड कर कर लिख सकते हैं. ठीक. सिर्फ ये 2 क्वेश्चन दिए. यहाँ पर मैंने ब्लैंक्स देख लें जो जो हमारे पास जा सकती हैं अल बेरूनी से रिलेटेड. दिस वन यहाँ देखें पेज नंबर 33 पर. नंबर 1 अल बेरूनी रियल नेम वाज Abu Rehan Muhammad bin Ahmad. Al-Biruni's real name was Abu Rehan Muhammad bin Ahmad. Al-Biruni traveled for about dash years. For about 30. Al-Biruni traveled for about 30 years through the length and breadth of the subcontinent. And Hindus were impressed by Al-Biruni's learning that they call him Vidya Sagar or Sea of the Knowledge. बेटा ये आपस में उबैद रजा और ये जो है बातें कम करें. मैं ब्लैंक्स डिस्कस कर रही हूँ. पेज नंबर 33. Al-Biruni real name was dash Abu Rehan Muhammad bin Ahmad. Al-Biruni traveled for about dash years 30 years through the length and breadth of the subcontinent. Hindus were impressed by Al-Biruni learning that they call him Vidya Sagar or the sea of the knowledge. Now पेज नंबर 33 पर ब्लैंक्स हैं. फिर पेज नंबर 34 के 2 क्वेश्चंस हैं. हाँ पेज नंबर 33 की ब्लैंक्स लेफ्ट कर दी है मैंने भी क्योंकि इब्ने बतूता से रिलेटेड है. आई विल डिस्कस यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके आई एम सेइंग यू अल्लाह हाफिज. यू हैव टू डू योर होमवर्क फ्रॉम पेज नंबर 30 to 34. ओके अल्लाह हाफिज. आपकी मर्जी है बेटा अर्शिया जितने पॉइंट्स आपको लगे कम से कम 5-6 पॉइंट्स आप इसमें जितने आ सकते हैं आप ऐड करिएगा. आंसर लेंदी है ये. जितना लिख सकते हैं आपका आंसर में आए कम से कम एटलीस्ट 6 से कम नहीं होने चाहिए. ठीक है मैं ये कह रही हूँ आपने जो है कम से कम जितने आपके पॉइंट्स आ सकते हैं लिख सकते हैं. अल्लाह हाफिज.